Hello everyone, welcome to Guidance IAS, and today continuing our series we'll be covering April's third week current affair. So without wasting any further time, let's just directly get into it. So the first topic of the week is, again, we always start with polity. So the first topic is MP's panel lend voice against elephant trade. As our approach has always been, we'll first deal with the contextual part of it, and then we will understand each and every provision or each and every thing about this particular news. So context सबसे पहले यही है that wildlife the amendment bill of 2021 after being introduced in Lok Sabha इसको उसके बाद रेफर किया गया into the standing committee on science and technology, environment, forest and climate change, and they have recommended certain things. What they have recommended, they've recommended not to encourage the sale and purchase of captive elephants. Further, we will deal with what exactly this Wildlife Protection Amendment Bill 2021 is all about, and what are some of the issues related with it, or what are certain things which are missing in the bill. All right. So this पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021, इसको अमेंड इससे पहले जो बिल था वो हमारे पास था 1972 का. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी फेमस बिल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल ऑफ 1972, राइट. इसी में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं इन 2021. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज टू सी द डिफरेंस बिटवीन, अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन 1972 Wildlife Protection Act of 1972 and 2021. There is a major difference. I want all of you to pay attention here, because there is a very major difference जो कि इन दोनों acts में लाया गया है, 2021 में amend किया गया है. So what was there in 1972? Actually there were 6 schedules. 6 schedules थे, और those 6 schedules were divided into 3 parts. 4 schedules were fixed for, there were the four schedules were basically fixed for protected animals, or you can say protected animal species, right? One, you can say, or one was for protected plants, right? 4 was for protected animal species. One schedule was for protected animal species, and one was for vermin species. Vermin species मतलब we are allowed to kill these species, like for example rat. ठीक है, ये इस तरीके से हमने डिविजन करा हुआ था. But we have amended this, and we have divided, or we have just provided 4 schedules now. ठीक है, and those 4 schedules again are divided into 3 parts, but now only 2 schedules has been given to protected plant species. ठीक है, जितने भी plant species हैं जिनको protection की जरूरत है, they will come under these 2 schedules only now, right? Earlier there were 4 schedules pertaining to this, and one is allotted to the animals. ठीक है, and this vermin part has been removed now, और इसकी जगह पर one clause or one schedule has been given to CITES species, or the species which are protected under CITES, right? This is something you have to remember. ये एक नई चीज है जो add हुई है. CITES, we all know, is Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, right? ये एक international agreement है between the government to protect the endangered animals and plant species, right? We all know this, and it got effective in 1975. Sites I'm talking about, and इसकी location की अगर हम बात करें, so it is situated in Geneva, which is in where? Which is in Switzerland, right? So you have to remember this. All right, the difference is clear to you now between 1972 and the amendment which has been done recently. All right, coming back to our slide. So yeah, so we have done the highlights of this bill. Along with that, what is missing in the bill? What is missing in the bill? Actually, what has recently happened, that we have narrowed down, or you can say we have narrowed down the definition of
definition of invasive species. Right, and this is one of the major, आप बोल सकते हो कि काफी controversial point है कि invasive species के डेफिनेशन को हमने काफी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है. इनिशियली इन्वेसिव स्पीशीज का जो डेफिनेशन दिया गया था बाय सीबीडी वाज वेरी वाइड डेफिनेशन. अभी इन्वेसिव स्पीशीज को हमने काफी नैरो डाउन कर दिया है और इसीलिए ये काफी एक इसका डिसएडवांटेजेस पॉइंट भी बोला जा रहा है. अलॉन्ग विथ हमने वर्मिन वाला पॉइंट भी अभी हमने देखा, वर्मिन वाला स्केड्यूल भी हमने रिमूव कर दिया है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि इसमें नेगेटिव बताई जा रही हैं. ऑलराइट, along with this there are few things which has again been introduced in amendment of 2021, that is state government को अभी थोड़ा control ज़्यादा दे दिया गया है, penalties को increase कर दिया गया है if anybody doesn't you know abide by rules mentioned in the act. So उन पे जो भी penalties लगते थे पहले उनको increase कर दिया गया है. Right, so and yeah, so these were some of the points. Coming back, the bill does not include, I have told you this invasive species wala point, ठीक है, narrow down कर दिया है. Right, vermin को हमने remove कर दिया है. So this is again a point you need to remember. Along with that, this bill also proposes to change the schedules. We have already dealt with it. हमने 6 schedule से 4 schedule पे हमने shift कर लिया है. And this also allows the commercial sale and purchase of the elephants, which will no longer be prohibited under this act. So as I've told you, this also allows the commercial sale of elephants, right? And of course ये काफी काफी एक गलत स्टेप इसको माना गया है क्योंकि ये लेजिटिमाइज कर देगा एलिफेंट्स की सेल एंड ट्रेड को. ठीक है, ऑल राइट देन, मूविंग अहेड, देयर आर सर्टेन other things which is related with this particular act. Hanji, there are certain constitutional provisions related to the wildlife, and the first one is 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, which talks about that forest and protection of wildlife animals and birds was transferred from state to concurrent list. So you have to remember this factual point for your prelims examination, that they have been shifted to the concurrent list. Along with this, Article 51A Clause G of the Constitution also talks about protecting the it basically says that it is our fundamental duty. It is our fundamental duty of every citizen to protect the natural environment, right? And Article 48 Clause A says that it basically, this clause comes under DPSP, right? ठीक है, ये DPSP का part है, right? It says that state shall endeavor to protect the environment, ठीक है, or the plants and the animal species, everything is inclusive of it. So state shall endeavor to protect the natural environment. These are the two clauses you have to remember which are related with the wildlife or the environment. ठीक है, all right. Now talking about little bit of background of this 1972 or the Wildlife Act as a whole. Initially 1887 में it started. The Wildlife Bird Protection Act was passed initially, ठीक है, British गवर्नमेंट ने पास किया था. उसके बाद अगेन इट गॉट अमेंडेड इन 1912. उसके बाद और एक सेकेंड लॉ पास किया गया, ठीक है, जिसको हमने वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट बोला, राइट? इट गॉट अमेंडेड इन 1935 एंड देन आफ्टर दैट वी केम अप with more clauses in 1960, which talked about there's a rising issue of protection of wildlife and the prevention of certain species from becoming extinct, which came into limelight. And finally we came up with the 1972, और ये वाला काफी important है for our examination point of view, because forest part from the state subject was shifted to concurrent list by passing this particular act. And what are the major objectives of this particular act? It's very simple. It was basically to prohibit hunting. It was also, to protect and manage the wildlife habitats, to protect to establish the protected areas. Protected areas हमें पता है, national parks हो गए, wildlife sanctuaries हो गई, biosphere reserves हो गए. These are the protected areas, ठीक है. तो ये सब जो है 1972 में ही propose किया गया था. Then management of zoos and everything, ठीक है. Also the regulation and control of trade in parts and products derived from the wildlife. So not just wildlife we have to protect, but we also have to take care of the produce derived from the wildlife. This was
These were some of the objectives of 1972 Wildlife Act. All right. All right, then. We have already talked about this DPSP 41 clause. Moving ahead with the next topic, Interstate River Water Dispute Act 1956. Again, रिवर डिस्प्यूट्स काफ़ी टाइम से हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम रहा है, ठीक है. न्यूज़ में भी काफ़ी होता है, एंड anything which is repeatedly there in the news becomes automatically important for UPSC. ठीक है. So this is important. This is very important topic. First thing first, let's see the context. तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी रिक्वेस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को to, they have requested this one more time to refer its complaint made under Section 3 of the Interstate River Water Dispute Act 1956 to the existing Krishna Water Dispute Tribunal 2 or Brajesh Kumar Tribunal immediately to finalize the fair and equitable share of Telangana in Krishna waters. Okay, this was a plea by Telangana government. Now, what is important for us to understand here is about interstate water dispute and its constitutional provisions. So, Article 262 talks about interstate water dispute. And when we talk about Article 262, let me just write down this here. When we talk about Article 262, we need to understand that there are two provisions related to Article 262. ठीक है, दो provisions हैं जिसमें से the first provision say that Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use or distribution or control of water in the interstate river. So Parliament may by law, Parliament will provide this. Parliament has the authority. Parliament has been given the authority. Parliament may by law can adjudicate this entire thing of रिवर, कि किसके पास कितना पानी जाएगा, उसका डिस्प्यूट से रिलेटेड जितने भी हैं, कंट्रोल ऑफ वाटर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, पार्लियामेंट में बाय लॉ कैन एडजुडिकेट ऑल ऑफ देम. Right? So Parliament has this power. This is one of the provisions of Article 262. Second provision of Article 262 says that Parliament may also provide that neither Supreme Court nor any other court is to exercise jurisdiction. ठीक है? Neither Supreme Court, neither SC nor any other court, is to exercise the jurisdiction pertaining to what? Pertaining to interstate water dispute, right? And who can say this? Parliament again has the power कि पार्लियामेंट ही इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि ना सुप्रीम कोर्ट के पास ना किसी और कोर्ट के पास ये पावर है. पार्लियामेंट कैन इंस्ट्रक्ट देम, राइट? पार्लियामेंट बेसिकली कैन, पार्लियामेंट कैन ऑल्सो प्रोवाइड दिस दैट नन ऑफ द कोर्ट हैज दिस पावर टू हैव दिस jurisdiction in interstate water dispute cases, right? So these are the two provisions related with it. Article 262 काफी important है, ये आपको याद रखना है. All right. So this was about 262. Moving ahead, there are certain issues surrounding the Interstate Water Dispute Act of 1956. Let us understand 1956 वाले act में क्या problems हैं. सबसे पहला, the act itself does not tells about or does not frame any time limit कि कोई भी dispute अगर है किसी भी दो states के बीच में जो dispute चल रहा है वो dispute कब तक solve हो जाना चाहिए, उसकी कोई time limit नहीं frame करता है ये particular act. तो ये एक बहुत बड़ा इसका loop hole है time limit वाला, ठीक है? इसीलिए चीजें टाइम पे भी सॉल्व नहीं हो पाती है. सो दे इट डू नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट for the to resolve the cases basically. Then again delays is also related with the same thing क्योंकि there is no prescribed time limit तो delay अपने आप हो जाती हैं चीजें. Then you have River Board Act 1956. River Board Act 1956 actually ये बनाया गया था to help what? To help Water Dispute Act 1956 या फिर इसको facilitate करे, उसको help करे, but actually इसने अभी तक कोई help नहीं करी है. It has been a dead letter since
since its formation. ठीक है. Next is surface water is controlled by Central Water Commission and groundwater by Central Ground Water Board of India. तो ये दोनों जो bodies हैं दे वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इन दोनों में एक कॉमन फॉरम नहीं है, कॉमन डिस्कशंस ये नहीं करते हैं. सो बेसिकली किसी भी चीज में अगर किसी भी डिस्प्यूट में अगर बहुत सारी बॉडी का एक कॉमन डिस्कशन नहीं होगा, एक साथ बैठ के डिस्कशन नहीं होगा, तो प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली टू रीच टू एनी कंक्लूजन और टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर डिस्प्यूट, राइट? This is precisely the same problem with these two bodies, and hence we are unable to make decision or solve these cases on time. Okay, this chart here is depicting some of the major interstate river disputes. Like for example, Ravi Bias Satluj का एक इंटर डिस्प्यूट है जो कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, राइट? दीज स्टेट्स यू हैव टू रिमेंबर. जिस भी स्टेट से जो भी रिवर जितने भी स्टेट से फ्लो करता है, द नेम ऑफ दोस स्टेट्स यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट इज नर्मदा डिस्प्यूट. देन इट बिलोंग्स टू, it is between which all states? Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan. Very easy to remember. Then you have Mandovi या फिर महादाई जिसको हम बोलते हैं. गोवा कर्नाटका का मेजरली इशू है, but there are 3 states involved: Goa, Karnataka and Maharashtra, right? Then you have Krishna water dispute related with Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka. Then you have Periyar, आपको सबको पता है, it flows through Tamil Nadu and Kerala, तो उन दोनों के बीच में ही dispute होगा. Then you have Godavari, which is the state concerned are Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Odisha and Madhya Pradesh. Then lastly you have Kaveri. Kaveri, very very important topic. I want all of you to just go and uh, read about this river, its tributaries, where all it flows through, right? तो ये आप सबको prepare करना है about this river, and the state concerns are again Karnataka, Tamil Nadu, केरला एंड सम पार्ट ऑफ पुदुचेरी ऑल्सो, क्योंकि पुदुचेरी में भी इसका थोड़ा सा पार्ट फ्लो करता है. बेसिकली ये मेजर डिस्प्यूट है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, बट अगेन केरला एंड पुदुचेरी ऑल्सो होल्ड्स अ पार्ट ऑफ कावेरी वाटर, कावेरी river water. All right, so these are some of the important river disputes we have in our country since ages, I would say, क्योंकि बहुत टाइम हो गया literally. Next topic is government lays down norms for quota in promotion. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं बहुत अच्छे से आपको क्रोनोलॉजी इसमें समझाऊंगी. देयर आर मेनी केसेस इन्वॉल्व इन दिस रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन. इंदिरा सहानी से लेके अभी 2022 के जजमेंट तक आई एम गोइंग टू टेल यू द एंटायर क्रोनोलॉजी ऑफ द रिजर्वेशन इन प्रमोशन. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे लिटिल अटेंशन हियर. बट फर्स्ट लेट अस सी द कॉन्टेक्स्ट हियर. सो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, व्हिच इज DOPT, they have asked all the departments of the central government to collect the data on inadequacy of representation of SCs and ST before the implementation of the reservation in promotion. ठीक है, SC ST को reservation देने से पहले they have asked for the data कि कहाँ पर आपको inadequate seats मिल रही हैं या inadequate आपको services, जिन सर्विसेज में आपको inadequate representation है, उन सब का डेटा हमें लाके दिखाइए so that we can help you in the reservation and promotion, right? Okay. But there are certain conditions. We will come to this. Let us first start with this chronology of which I was talking about. And the first and the foremost is Indra Sahani judgment of 1992. Okay, just a second. Indra Sahani judgment of 1992, a very very famous case. Indra Sahani 1992. Okay, Indra Sahani mein what happened? Indra Sahani mein government, constitution gave this provisions, constitution of our country, the Supreme Court, not the constitution, sorry, I beg your pardon, Supreme Court was of the opinion, or Supreme Court opined or gave this judgment that it declared that Article 16 Clause 4 of the Constitution did not provide for the reservation in promotion. ठीक है, did not provide. It says that Article 16 Clause 4 did not provide. ये provide नहीं करता. This did not, you have to remember, did not provide for reservation in promotion. ठीक है, ये प्रोवाइड नहीं करता. एंड व्हाई सुप्रीम कोर्ट गेव दिस जजमेंट? सो दैट द वर्क एफिशिएंसी कुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अनएफिशिएंट इंसान का आप प्रमोशन कर दो और
काम अच्छे से ना हो पाए. So work efficiency can't be compromised. This was the main agent. This was the main reason behind this judgment. Then after this, next judgment came, which was M. Nagraj versus Union of India judgment 2006. M. Nagraj. M. Nagraj. So this was the first one, right? Second one, M. Nagraj versus Union of India 2006. ठीक है. एम नागराज के लिए आपको दो चीजें पहले समझनी पड़ेंगी. एम नागराज के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट 77th अमेंडमेंट एक्ट एंड 85th अमेंडमेंट एक्ट. ओके. 77th अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली इट प्रोवाइडेड, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगेन ये प्रोवाइड करा दैट it was basically to override the judgment and enable the reservation and promotion, and it added a new clause which was 16(4)(a). So it was basically to enable the promotion in reservation of SC and ST, right? और उसके लिए it added 16(4)(a), right? Okay. So this was basically to override this Indra Sahani judgment. Indra Sahani judgment को override करके इन्होंने बोला कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये reservation in promotion should be given to SC and ST. What does 85th constitutional amendment says? 85th amendment act says that there should be a consequential seniority should be given in seniority should be given to SC and ST, which means अगर किसी SC ST या फिर जनरल इंसान, ठीक है, एक ही सर्विस पे एक ही दिन अगर उनको अपॉइंट किया गया है, तो SC ST वाले इंसान को पहले उनको रिजर्वेशन दी जाएगी या फिर उनको प्रेफर करा जाएगा इन दी प्रमोशन. ठीक है. दिस वाज about 85th constitutional or 85th amendment act, right? Now what happened in M नागराज केस कि किसी जनरल कैटेगरी के इंसान ने आके ये प्ली करा कि 77th और 85th को हम चैलेंज करते हैं, ठीक है, हम इनको सही नहीं मानते एंड वी आर चैलेंजिंग इट. सो एम नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट गेव दिस जजमेंट दैट नो, वी डू नॉट अग्री टू दिस प्ली. हम ये रिजर्वेशन को सही मानते हैं एंड वी गिव दिस रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू SC एंड ST. बट right, this but you have to remember, नागराज केस का जजमेंट मैं आपको बता रही हूँ. सो नागराज केस में they said कि okay, we allow reservation and promotion, but there are 3 conditions. But we put 3 conditions which you need to meet before getting the reservation and promotion for SC and ST. Now what were those 3 conditions? पहला condition, तो 3 कंडीशंस के लिए नागराज केस ने बोला कि अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, ओनली देन वी विल अलाउ द रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर SCs एंड ST. द फर्स्ट कंडीशन वाज दैट स्टेट मस्ट शो द बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास. दैट स्टेट मस्ट शो द बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास. जिसको भी रिजर्वेशन के लिए स्टेट बोल रहा है उसकी बैकवर्डनेस स्टेट को शो करनी पड़ेगी. दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन पुट बाय नागराज केस, राइट, नागराज जजमेंट. सेकंड वाज the class is inadequately represented in service for which promotion will be granted. So जिस भी क्लास के लिए ये दिया गया है, that class must be inadequately represented where in that particular service, उस particular service में या उस particular job में वो class कम represent, उस class का representation inadequate होना चाहिए. Only then we can give you the kind of reservation you want, right? And the third condition was that reservation जो दिया जाएगा should not impact the efficiency
efficiency of the work in any of the organization. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को भी प्रमोट कर दिया और वर्क एफिशिएंसी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. So these three conditions should be met. Only then we can give the reservation to the, or allow the states to give the reservation to the people, or the reserved classes, or the SC/ST specifically, right? Okay. Now, after that, after Nagaraj case, again in 2008, Jarnail Singh judgment came in 2018. अब इसने क्या बोला, ठीक है, नागराज के बाद ये इसकी इनकी जजमेंट आई. इन्होंने ये बोला दैट दे मॉडिफाइड द नागराज जजमेंट, राइट? मॉडिफाई करके दे सेड दैट स्टेट नीड नॉट टू प्रोड्यूस क्वांटिफाइबल डेटा. This said that state, Nagraj, remember, Nagraj asked for, Nagraj case mein, the Supreme Court asked for those three conditions to be met. But Jarnail mein, they said that state need not to produce the quantifiable data, which is needed to give reservation in what? In promotion. एक तो हम यहाँ पर प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रिजर्वेशन, ठीक है? अपॉइंटमेंट के टाइम पे रिजर्वेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रमोशन, द रिजर्वेशन ड्यूरिंग प्रमोशन, राइट? सो दिस वाज गिवन बाय जर्नेल सिंह, ठीक है? बट नाउ इन January 2022, again the Supreme Court, like it says, so January 2022, DOPT has asked all the departments that you need to give this data, ठीक है, जहां पर भी आपको inadequate representation मिल रहा है of your class, of the reserved class, you need to provide us with the data. Only then we will consider to give the reservation, or only then we will allow to give the reservation in promotion, ठीक है? तो जर्नैल सिंह का थोड़ा मॉडिफाई कर दिया इन्होंने अगेन स्टेटमेंट, ठीक है, उसको ओवरराइड करा, राइट? सो आई होप द क्रोनोलॉजी इज क्लियर टू यू नाउ. सबसे पहले इंदिरा सहानी केस में रिजर्वेशन के लिए ही, रिजर्वेशन के लिए ही मना कर दिया. सो it did not allow for reservation, ठीक है? नागराज में we read about 77th Amendment Act and 85th Amendment Act, जहां पर reservation दे दिया गया, ठीक है? उसके बाद 77th और 85th को challenge किया गया नागराज केस में, right? किसी general category की plea ने, right? Wherein it gave कि okay, we agree that we will give the reservation, the state will give the reservation, but you need to fulfill those three conditions I've just written. वो तीन conditions पूरी करनी पड़ेंगी तभी आपको reservation and promotion मिलेगा. उसके बाद जर्नैल सिंह 2018 केस आया जहां पर quantifiable data के लिए मना कर दिया गया, and again in 2022 they've asked for the data, right? This was the chronology, and I hope this topic is very much clear to you now, right? Okay, so Hanji, we have already read this. So that was all about reservation. Next up, we have pendency of cases in Supreme Court. Pendency of cases in Supreme Court. We know that India's legal system has the largest, you can say, has one of the largest backlogs. Okay? Pending. There are pending cases. There are so many pending cases. It is said that I guess around 30 million cases are pending in our country. ठीक है, हमारे लीगल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग केसेस है, राइट? एंड दिस हैज़ नॉट स्टॉप, दिस इज कॉन्टिन्यूसली राइजिंग. द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस आर कॉन्टिन्यूसली राइजिंग, राइट? और इसी की वजह से बहुत सारे लोग तो अभी ट्रायल्स में ही हैं, ठीक है? उनका कुछ भी एक्चुअली हो नहीं पा रहा है फाइनल डिसीजन. अ लॉट ऑफ डिटेनीज जो हैं वो ट्रायल में ही अभी हैं, राइट? ओके. The Supreme Court is set to witness many vacant posts in 2022 with many current judges retiring this year. concern यही है कि pendency cases बहुत है. The Supreme Court statistics show that 70,362 cases are pending with it as of April 2022, and over 19% of them are not ready to be placed before a bench for judicial hearing as they have not completed the required preliminaries. ठीक है, तो इन्होंने तो अपनी कुछ तो ऐसे केसेस हैं जो जिनकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस ही पूरी नहीं हुई है, राइट?
So this was about pendency cases. Now there are certain steps which has been taken by the government to solve the number of pendency cases. उसमें पहला आ जाता है that they have adopted the national litigation policy of 2010 ताकि to transform the government into an efficient and responsible litigant. This was, I'm talking about 2010. These are some of the points you can quote in your mains examination whenever a question comes about the pendency cases. So these are some of the steps our government has taken. Second is जितने भी states हैं, they'll formulate a state litigation policies after national litigation policies जो जब हमने frame करी, उसके बाद states को भी बोला गया to frame a state litigation policy so that state level पे जो भी है उनको भी solve किया जा सके. Next we have legal information management and briefing system also was created in 2015 so that we can track the केसेस जो कि जहां पर गवर्नमेंट इज वन ऑफ द पार्टीज. बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट इज आल्सो वन ऑफ द पार्टीज ना, दो पार्टीज में गवर्नमेंट इज वन ऑफ द पार्टीज जिसके बीच में केस होता है. सो दिस लिम सिस्टम वाज क्रिएटेड इन 2015. यू कैन रिमेंबर दिस. they can ask you they can ask you they can ask you this question as one of the facts in your prelims examination, so you need to remember that lims is related to the pendency cases or the court, okay, or the legal things. Okay, next we have Supreme Court had advised the center that criminal sentenced to imprisonment for 6 months or a year should be allocated social service duties rather than sent to further chalk, rather than to ताकि और ज़्यादा केसेस को ना बढ़ाने दिया जाए. ठीक है, उसको उनको हम सोशल सर्विस के लिए भेज सकते हैं ताकि अगेन दिस वाज अगेन अ स्टेप टू रिड्यूस द पेंडेंसी केसेस वी ऑलरेडी हैव, राइट. सो that was all about it. Up next we have उड़ान स्कीम. उड़ान स्कीम एक बहुत पुरानी स्कीम है, ठीक है, इसके नए नए वर्जन आते गए हैं, बट उड़ान स्कीम बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. Okay, first this point only you have to remember, ये एक flagship scheme है which is basically to connect tier 2 and tier 2 and tier 3 cities basically through what, through underused or unused or underused airports basically. So it would provide air connectivity in tier 2 and tier 3 cities. उड़ान stands for उड़े देश का आम नागरिक. ओके, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था एंड इट एम्ड एट एनहांसिंग द कनेक्टिविटी टू रिमोट एंड रीजनल एरियाज. ठीक है, ताकि कनेक्टिविटी भी हो सके सारे एरियाज की. एंड द सेकेंड मेजर पॉइंट विच जो कि ध्यान में रखा गया था वाइल फ्रेमिंग उड़ान वाज टू गिव द अफोर्डेबल प्राइजेस टू दी सिटीजन्स. तो अफोर्डेबिलिटी को भी ध्यान रखा गया था. आई गेस इट इज 2500 फॉर पर आवर, इतना ये कोस्ट करते हैं 1 घंटे के लिए. ठीक है, सो इसको भी इन्होंने ध्यान में रखा था. अगेन इस स्कीम में नियर हाफ ऑफ द सीट्स ऑफ उड़ान फ्लाइट्स are offered at subsidized fares and the participating carriers are provided a certain amount of viable gap funding or VGF. VGF या फिर वायबल गैप फंडिंग, एक्चुअली जितना भी आपका टोटल कॉस्ट आता है किसी भी चीज में, ये गवर्नमेंट का इंसेंटिव है कि जितना भी आपका टोटल कॉस्ट आएगा उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू, गवर्नमेंट इज गोइंग टू, ठीक है, फिल दैट गैप. इसीलिए हम इसको वायबल गैप फंडिंग भी बोलते हैं. इट इज बेसिकली टू मेक सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स मोर इकोनॉमिकली वायबल. ऑलराइट, सो and the scheme will be jointly funded by central and the state government, so it is centrally sponsored scheme. All right, उड़ान 4.0 नया एक हमने 4th राउंड के साथ आए हैं हम ऑफ उड़ान स्कीम 2019 में ही, जो बेसिकली फोकस करने वाला है ऑफ नॉर्थ टू दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स पे ये फोकस करेगा, हिली एरियाज पे ये फोकस करने वाला है. ठीक है, और आइलैंड स्टेट्स जितने भी हमारे कंट्री में उन पे ये फोकस करने वाला है. ठीक है, इसमें हम और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड करने वाले हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर, सी प्लेन्स. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दी airplanes we are also going to include helicopters and seaplanes in Udan 4.0. Right, these are some of the locations across India jahan par 78 naye routes were approved under this 4th round. Right, 3 successful rounds of bidding were conducted by Ministry of Civil Aviation. Right, 766 routes have been sanctioned under Udan scheme so far, and 274 Udan routes have been operationalized by the Ministry of Civil Aviation since its inception, connecting how many airports? 45 airports and 3 heliports.
राइट तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इफ यू कैन रिमेंबर यू कैन बट देयर इज नो मेजर नीड टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स बट डेफिनेटली आपको कोर पता होना चाहिए ऑफ उड़ान स्कीम एंड डेफिनेटली उड़ान 4.0 और मे बी द नेक्स्ट राउंड जितने भी आते जाएंगे यू हैव टू you need to be clear with the distinctions of all of them. That was all about Udan scheme. Up next we have election commission decides on party symbol. Election commission बहुत सारी चीजें decide करता है. हम election commission के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे. We will touch upon some of the functions of election commission and election commission as a constitutional body. But let us first see what is the present context that why it was in news. So Delhi High Court ने they have dismissed a public PIL, public interest litigation, seeking the removal of election symbols from ballot paper from a municipal election in the city. Actually, what has happened recently, एक municipal election में एक plea आई which said कि जिन लोगों का, जिन parties का already एक election symbol है और एक known election symbol है, उनको एक unfavorable advantage मिलेगा over those symbol और over those party जिनका इतना famously known symbols नहीं है. ठीक है? This was the plea. Okay. So this was the basic issue. Now, if you talk about the election commission, so election commission we know is a constitutional body. Okay, constitutional body. We know we have constitutional bodies and statutory bodies. So election commission is a constitutional body. Along with this, it administers so many things. But जो election specifically अगर हम बात करें, elections part 15 of our constitution में mentioned hai, and election commission administers so many things. It administers the election of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assemblies. Right? Lok Sabha, Rajya Sabha और state legislative assemblies के election conduct करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इलेक्शन कमीशन की. यू हैव टू रिमेंबर कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं. बट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट द इलेक्शंस फॉर Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assemblies, right? Apart from this, there are apart from giving or allotting symbols to the parties, there are other functions as well which election commission performs. Like for example, issuing model code of conduct. आपको पता है election के time पे model code of conduct issue करना होता है, तो election commission की ही ये duty होती है to issue the model code of conduct. Apart from that, उसके अलावा जो है it also prepares the electoral roll and it decides on the election schedule also as to when and where on which date the election is to be held, right? Now it also issues, or you can say it also solves if there is any dispute. Suppose there is a party और उसका split हो गया है, ठीक है, एक ही party symbol था, अब उसका split हो गया है. Now वो symbol जो है किसके पास जाएगा? This thing will be decided by the election commission only, and election commission का ये जो decision होता है will be binding on both the parties. Election commission जो भी बोल देगा that this symbol goes to this group or that group or whatever election commission decides will be binding on both the parties. So dispute के cases में भी election commission has the power. Again, this is something you need to remember. That was about election commission. Up next we have next topic which belongs to economy, PLI. Scheme for textiles, production linked incentive scheme. First of all, you need to understand the meaning of production linked incentive. Production linked incentive, if you break these words you'll get to know the meaning of it also. Production linked incentive, so the more you produce, it is basically for manufacturers that the more they produce, the more incentives they're going to get from the government, right? Simple as that. Now, what is the context? That's recently 61 application for the project involving total investment of 19,077 crores have been approved under the production link scheme for which industry? For textiles industry. Textile industry हमें पता है is one of the largest sectors which is giving employment in our country. अगर हम इस स्कीम की बात करें, so this government has launched this scheme for textile sectors and for many other sectors as well. ठीक है, 13 sectors में है ये. It is a part of larger PLI scheme जो कि 13 sectors के लिए है और इसके लिए काफ़ी 1.97 लाख करोड़ का budget allocation भी किया है. Okay, now talking about the incentives. As I've told you कि ये manufacturers के लिए है कि the more they will produce, उनके incremental production पे हम government उनको कुछ incentives देगी. That is around 3 to 11%.
incentives they will be getting on their incremental production. Okay, now companies investing over 30 crores in plants, machinery, equipments, and civil works to produce the identified products will get an incentive of 15%. This is something you need to remember. इनको सबको 15 मिलेगा of their turnover, which needs to be rupees 600 crores in the third year. ठीक है, along apart from that, the companies investing between 100 crores and 300 crores will also be eligible to receive the duty refunds and incentives. So not just this 3 to 11%. अगर आपने 100 crore से 300 crore के बीच में invest करा, so you will also be getting the duty refunds and incentives. ठीक है, so basically government is trying to make our products more competitive in the market, okay, so that we can compete with the global economy, right, as well as हमारा export कम हो सके और हमारी demand बढ़ सके globally. I mean import कम हो सके so that we can increase our exports. All right, next, National Payment Corporation of India, NPCI, a very, very important topic. UPSC has asked questions over this time and again. They have been asking questions over on UPI, BEAM, NPCI, or the fintech things. They've been asking questions. Okay. Recently, what has happened? NPCI serves, हमें पता है, NPCI, ये जो, I want you to have a look here. See here, Meta Instant Messaging app, WhatsApp, has received clearance from the NPCI to add 60 million users to its UPI-based payment services, WhatsApp Pay. WhatsApp Pay एक नया फीचर भी आया है, दोज ऑफ यू यूजेस व्हाट्सएप, तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ था. बट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस बॉडी, NPCI. ठीक है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ओके, so NPCI serve as an umbrella body for the operation of retail payments in our country. इसको RBI ने establish करा था along with Indian Bank Association under the provisions of Payment and Settlement System of 2007. Now, this is the most important part of this entire slide, that what are the products of NPCI. NPCI के products क्या है? UPSC directly ये पूछ लेता है कि यूपीआई यूपीआई को किसने प्रोड्यूस करा था, भीम को किसने प्रोड्यूस करा था. दे डायरेक्टली आस्क यू दिस क्वेश्चन. तो ये लिस्ट आपको याद होनी ही चाहिए. रुपए इज a product of NPCI. Along with that, National Common Mobility Card, Bheem also, Bharat Interface for Money, ठीक है, which is a mobile payment app. हम सबको पता है, हम सब यूज भी करते हैं. UPI again बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला Unified Payment Interface. So ये basically एक system है that empowers that powers multiple bank accounts into a single mobile app, merging several banking features altogether. Right? Then we have Bharat Bill Payment System also. So these are some of the products belongs to NPCI. तो ये आपको याद रखने हैं. You need to learn all of these. Okay. Parboiled rice. Parboiled rice, सबसे पहले इसका सारा आपको मतलब समझ आ जाएगा once you break this term. So this par here is partially. Okay. Partially boiled rice. पार्शली बॉइल्ड राइस को अभी हमने, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि पार्शली बॉइल्ड राइस का जो परचेज है हम उसको रोकते हैं. ठीक है, द सेंट्रल हैज सेड दैट इट विल स्टॉप द परचेज ऑफ एक्सेस पार्बोइल्ड राइस ऑफ व्हिच तेलंगाना इज अ मेजर प्रोड्यूसर. नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि हमने ये पार्शली बॉइल करने क्यों शुरू करे राइस, क्या उसके एडवांटेजेस थे, एंड देन वी विल कम टू द पॉइंट वेर इन वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई now central government has stopped this. अभी क्यों ऐसा करा है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं parboiled rice क्या होता है. As I've told you, partially boiled rice होते हैं. Basically हम इनको partially boiled इसलिए करते थे to increase their quality और nutrients जो है वो increase हो जाते हैं when we partially boil them. Right? Clear? These were some of the benefits. Again, rice, it makes the rice tougher, right? और break नहीं होता milling के time पे. If we partially boil them, it also increases its nutritional value, right, along with this. So basically overall it increases the quality of a rice और insect resistant भी बना देता है. But what are some of the disadvantages जो कि अभी हो रहे हैं, जिनकी वजह से the central has asked to stop the purchase of these rices? What this partially boiling is doing to the rice is that it is making them darker. बहुत अनप्लेजेंट स्मेल हो जाती है उनकी वजह से, राइट, क्योंकि हमें सोक करके रखना पड़ता है राइस को और उसकी वजह से दे बिकम डार्कर. एंड
they smell unpleasant. Beside this, parabolic राइस parboiling राइस जो है मिलिंग यूनिट में भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है दैन अ रॉ राइस. तो बॉइलिंग करते टाइम, पार्शली बॉयल करते टाइम भी जो इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज मोर दैन द नॉर्मल जो हम मिल में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं. रॉ राइस को एक तो हम मिल में करते हैं और पार्शली बॉयल करते हैं, तो पार्शली बॉइलिंग के लिए हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है. दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस, राइट. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पैराबॉइल्ड राइस, वी हैव कवर्ड, राइट. डिसएडवांटेजेस वी हैव कवर्ड. ऑलराइट, so that was all about it. Up next we have India looking to boost the wheat export. हम सब ने ये काफी बार न्यूज में सुना होगा while the ongoing war between Russia and Ukraine कि we all know कि Russia and Ukraine accounts for 25% of the global wheat export. बट क्योंकि उन दोनों के बीच में एक वॉर चल रहा था तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट पे कमी आई है, एक्सपोर्ट पे कमी आई है. एंड टू फिल द वॉइड, टू फिल दैट गैप, वी हैव डिसाइडेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड कि हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे. ठीक है. इन दिस पर्टिकुलर न्यूज टुडे वी विल सी कि कौन कौन से वो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं या फिर कहाँ कहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो गैप हमें कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा, हाउ एग्जैक्टली वी कैन फिल दैट. ठीक है. सो रशियन इन्वेजन की वजह से एज आई टोल्ड यू 25% वो लोग करते थे, बट नाउ ड्यू टू दिस वॉर the export has decreased and people need wheat, so we can take the advantage of this. Okay. Status of India's wheat export अगर 2021 2022 की बात करें, they were estimated at 7.85 million tons. ठीक है. Quadrupling from 2.1 million tons in the previous year, so this has increased, which is a good thing. Okay. Now export this fiscal year are expected to be 10 million tons worth $3 billion. Now if we talk about the largest wheat exporters, उसमें सबसे पहला आता है रशिया, बट इसमें क्योंकि वॉर की वजह से यहाँ पर their export has decreased, so we can fill this gap. The next position is held by US, and then by Canada, and then by France and Ukraine. So these are the top 5 exporting wheat exporting countries. I want you to remember at least the major 3, the largest 3 for your prelims examination. कुछ facts आपको याद रखने हैं, तो ये 3 आप याद रख लीजिए. But just to give you a little idea that Russia was the major wheat exporting country. Now, which new market are expected to buy from India? So Egypt जो है, जो if we talk about the top importers, अगर हम top importers की बात करें तो Egypt is the top importer. Along with that, Indonesia is also one of the importers. Top importers में ये हैं. तो ये कुछ countries हैं जहां पर हम export कर सकते हैं. They will import our wheat. So Egypt हो गया, Jordan हो गया, and countries in the East Africa also they are likely to buy it from India. What is being done to facilitate this? तो हमारे commerce minister ने our commerce ministry has put in place internal mechanism to facilitate it. ठीक है. और सारे पेपर वर्क वगैरह करे हैं, फाइटो सैनिटरी मेजर्स भी करे हैं. ठीक है. सो दैट द एक्सपोर्ट कुड बी एनहांस्ड. ऑलराइट. नाउ इफ यू टॉक इन इंडियाज पर्सपेक्टिव, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, सो टॉप व्हीट इंपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया, जहां जिन जिन लोगों को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज बांग्लादेश, देन वी हैव नेपाल, देन वी हैव यूएई. अगेन at least 3 countries you remember. 3 top rankings आप याद रखें for your prelims examination. They can give you this question to arrange them. ठीक है. Arrange them on the basis of their ranking. So that was all about this topic. Moving ahead with the next topic called crisis in India. You all must be facing this problem, this electricity problem at your homes these days. ठीक है. पिछले कुछ महीनों से. So एक तो after COVID इकोनॉमी में कोल की जो डिमांड है दैट हैज इंक्रीज्ड. ठीक है. ऊपर से गर्मियों में डिमांड वैसे ही इंक्रीज हो जाती है. एंड नाउ between all of these, between the scorching heat and the advanced demand of our economy of coal, between all of this we are facing a coal crisis. So we are facing a coal crisis. Now these are some of the steps, like for example जो कि इसको जो है
सॉल्व करने के लिए हमने लिए हैं दैट ऑल द कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू ऑपरेशनलाइज द पावर प्लांट्स एट फुल कैपेसिटी टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन डोमेस्टिक कोल डिमांड. ठीक है. नेक्स्ट, सेंटर हैज डिसाइडेड टू अलाउ द cost of imported coal as pass through till December 2022, and it has also asked all the states to use imported coal for blending purposes to the extent of 10% instead of 4% to ensure कि एडिकेट जो कोल स्टॉक है उनको हम मेंटेन कर सकें. राइट. इशू वी हैव already discussed, and not just electricity is a problem, not just industries are facing problem, also the farmers, our agriculture sector is facing a problem क्योंकि उनको irrigation में problem हो रहा है. So agriculture is a major sector which is also facing great amount of problems. So these are some of the factors, these are some of the sectors which are facing problem. Okay. तो क्योंकि हम इंपोर्ट भी कम कर रहे हैं, कम कर पा रहे हैं, उसकी वजह से प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लाइट के जो प्राइसेस है वो further increase, they have also increased. Right. Now some, if we talk about some of the reforms in the coal sector, तो कोल माइनिंग को, कमर्शियल कोल माइनिंग को भी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, कमर्शियल कोल माइनिंग को भी अलाउ कर दिया गया है विद 50 ब्लॉक्स टू बी ऑफर्ड टू द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है. Then we have entry norms will be liberalized as it has done away with the regulation requiring power plants to use washed coal blocks को भी ऑफर करा जाएगा प्राइवेट कंपनीज को ऑन रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस इन प्लेस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. एंड देन कोल गैसिफिकेशन या लिक्विफिकेशन, जहां पर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा. एंड फाइनली कोल बेड मीथेन को भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे. कोल बेड मीथेन मतलब नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्टिंग द नेचुरल गैस फ्रॉम द कोल बेड मीथेन because it is a cleaner form of fuel. ठीक है. So these were some of the steps or some of the reforms we have taken pertaining to coal sector. Moving ahead with our next topic, digital banking unit. Digital banking unit recently budget, अगर आपने सुना होगा, budget में digital banking unit के बारे में our finance minister Nirmala Sitharaman, she said she talked about setting up 75 digital banking units in 75 districts of our country. Now हमारे लिए जरूरी है कि ये digital banking units क्या है, DBUs क्या है और इनके क्या benefits हैं. And first of all, digital banking क्या है? Digital banking तो is very easy to understand. Digital banking मतलब online चीजें करना, is as simple as that. ठीक है. digital banking हो गया, या फिर you can say आपका जो भी फिनटेक कंपनीज को एनकरेज करना हो गया, ये सब चीजें वी आर एनकरेजिंग, और इस साल के बजट में भी इन सब चीजों को डिस्कस किया गया है. व्हाट आर डीबीयूज और व्हाट आर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स? ये बेसिकली एक फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं. दीज आर द फिक्स्ड पॉइंट यूनिट्स व्हिच डिलीवर बैंकिंग प्रोडक्ट्स. लाइक फॉर एग्जांपल, बैंकिंग, जब आप बैंक में जाते हो, व्हेन यू गो टू द बैंक एंड यू वांट टू ओपन योर सेविंग्स अकाउंट और योर करंट अकाउंट और योर एफडीज, आपको सब कराना है. सिमिलर काम भी ये डीबीयूज करेंगे. ठीक है. तो यू कैन से कि बैंक जैसा सिमिलर काम ये करेंगे. ठीक है. कुछ कुछ चीजें करेंगे. डेफिनेटली नॉट एवरीथिंग कैन बी इंक्लूडेड अंडर डीबीयूज, बट डेफिनेटली कुछ चीजें, कुछ सर्विसेज आपको ये प्रोवाइड करेंगे. कुछ लोकेशंस पे इनको बनाया जाएगा ताकि बैंकिंग को कहीं ना कहीं हम, डिजिटल बैंकिंग को कहीं ना कहीं हम you can say spread कर सके across the country. ठीक है. So this was one thing. एंड बेनिफिट्स तो आपको पता ही है, टू यू नो, ताकि हम पहुंचा सके डिजिटल बैंकिंग टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री. राइट. So this were this was DBUs. Now one more point you need to remember, that not every commercial bank can open the DBUs. जिनको RBI allow करेगा, only those banks can open the DBUs, जहाँ पर भी RBI बोलेगा. Right. These are some of the benefits of online banking. Like for example, you can transfer the money electronically. ठीक है. स्पीडी लोन एप्लीकेशन आपका हो सकता है, आप ट्रांसफर कर सकते हो फंड्स इजीली, आप अपने चेक्स वगैरह डिपॉजिट कर सकते हो. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग. Alright, moving ahead with our next topic, which belongs to international relations, NATO enlargement. Due to this ongoing war between Russia and Ukraine, NATO काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, hence हमारे लिए भी important हो जाता है. ठीक है. NATO, North Atlantic Treaty Organization. ठीक. सो बेसिकली रशिया ने वॉर्न किया है फिनलैंड को और स्वीडन को अगेंस्ट नेटो, अगेंस्ट ज्वाइनिंग नेटो, आर्ग्यूइंग दैट this move would bring instability in the
यूरोप. रशिया एक्चुअली यही चाहता है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रशिया वांट्स, दैट दे डू नॉट वांट मोर एंड मोर कंट्रीज टू जॉइन नेटो. एक्चुअली नेटो की जब फॉर्मेशन हुई थी तभी भी दे प्रॉमिस दैट वी वोंट बी एक्सपैंडिंग आवरसेल्व्स, बट सिंस देन दे हैव बीन एक्सपैंडिंग देमसेल्व्स. ठीक है, इनिशियली जितने मेंबर्स थे अभी उनका डबल मेंबर्स हो गए हैं नेटो के. ठीक है, सो दे हैव ब्रोकन देयर प्रॉमिस ऑलरेडी, बट रशिया डज नॉट वांट कि अभी फर्दर ज्वाइन करें, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ दिस वॉर आल्सो. ठीक है, रशिया डिड नॉट वांटेड यूक्रेन आल्सो टू ज्वाइन नेटो. ठीक है, या फिर यूक्रेन ऑल्सो, और कहीं ना कहीं वो ये भी नहीं चाहता था कि यूक्रेन के बॉर्डर पे आके नेटो बैठ जाए, क्योंकि फिर वो रशिया के बहुत पास हो जाएगा एंड इट माइट थ्रेट रशिया. ठीक है, सो दिस वाज about it. Now, if we look at the map, these are the countries. मैं आपको बताती हूँ. These are the countries. If you talk about Denmark, Germany, France, Britain, Spain, Portugal, these are the countries which were NATO members before 1989. The new members which joined after 1989, ये हैं आपका चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और ये सब कंट्रीज. ठीक है, सो ये कुछ countries हैं, right? So if you see, these are the NATO members and this is Ukraine, right? This is Moscow, Russia. ठीक है, यहीं पर war चल रही है, and NATO does not wanted कि Ukraine to go into the NATO, to go into the NATO grouping, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो NATO यहाँ तक पहुंच जाता, border of Russia. ठीक है, दो रशिया हैज़ ऑलरेडी annexed क्रीमिया in 2014, और यहाँ पर जो दो आपके पार्ट्स हैं, ईस्टर्न यूक्रेन में पार्ट है, दैट अगेन दैट्स नॉट द टॉपिक ऑफ द डे. यूक्रेन रशिया वॉर में आपने डोनबास रीजन को पढ़ा होगा, ईस्टर्न यूक्रेन को, जिन्होंने इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर करा है, एंड रशिया हैज रिकग्नाइज्ड आल्सो दैट independence so that it can help them in this Russia and Ukraine war, right? So this is the map and some of the countries of NATO. All right, moving ahead with our next topic, BRICS country. तो अभी एक summit हुआ है, virtual summit हुआ है of Brazil, Russia, India, China, South Africa grouping. ठीक है, so India hosted last year's BRICS summit, right? And this is the first summit which was hosted by China since the tension broke out at the line of control. So BRICS member की अगर हम बात करें, we have 5 members: Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Very easy to remember, and yeah, that's very easy. The full form only, it has all the member names. If we talk about the what kind of percentage it holds at a global level, so 42% of the world's population BRICS के अंडर है, right? BRICS member countries के अंडर है. 23 of the global GDP it has, all the BRICS members together. Then 17% of the world trade they do, all the BRIC members together I'm talking about. Then we have 26.6% of the world's land area and 13.2% of the world's voting power they have combined together. All right. Then up next we have Europe gas crisis. Europe gas crisis, a very, very important topic. So ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और रिसेंटली काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, एंड आई वांट यू अगेन टू पे अटेंशन ओवर हियर. I'm going to deal with it in a very comprehensive way so that you can understand each and every dimension of this topic. ठीक. So recently, German economic minister has said that they are under power. The Germany is under gas crisis. Okay. So what is the present topic? Actually, रशिया की एक गैस कंपनी है, गैस प्रोम. दे स्लैश्ड फ्लोज थ्रू नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन नंबर 1. Remember this Nord Stream pipeline number 1. I'm going to just tell you what is the significance Nord Stream pipeline number 1 holds. But अभी के लिए ये याद रखें कि इस पाइपलाइन के थ्रू 60% गैस सप्लाई को रशिया ने रोक लिया है टू जर्मनी और टू यूरोप. राइट, दो रशिया is of the opinion कि क्योंकि यूएस ने कुछ सैंक्शंस उन पे इम्पोज कर दिए थे बिकॉज ऑफ द वॉर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, और उन्हीं सैंक्शन की वजह से रशिया इज फेसिंग सर्टेन टेक्निकल इश्यूज ड्यू टू विच दे आर अनेबल टू सप्लाई द गैसेस. बट the global leaders are of the opinion that no, it is not so. It is just the Putin's power politics. But again, we are not going into the politics. We'll stick to our today's topic. So first, since we are done with the context, we will see little bit of historical background of this entire topic. So in 1960s and 1970s, what had happened, Europe actually used to roughly used to
consume the same amount of energy as it used to produce, right? But gradually what happened, the gas fields belonging to, especially the North Sea gas fields belonging to UK and Netherlands, they basically declined, and hence the production of Europe decreased. Okay, the production of Europe in terms of natural gas production, it decreased, right? And over the same period of time, Europe also decided not to, not to switch to coal, or basically cut down to coal, so that it can also achieve its carbon neutrality by 2050, which the entire world has committed to achieve the carbon neutrality I'm talking about by 2050. In recently also they have committed this in a COP26 meeting which held in Glasgow, UK. India committed this, or India pledged this to achieve it by 2070, right? तो ये सब चीजें हो सके. And not just this, in addition to this, after Fukushima nuclear disaster, you all must be knowing, in 2011 Fukushima nuclear disaster, Germany or the Europe, basically they have rejected investing in the nuclear energy also. So basically what I'm trying to say, that they are majorly focusing their consumptions towards the natural gas resources only. More and more they are doing this, right? Now, if we talk about that, how much dependency or how much Europe is dependent on the Russian gas. So look at here, the major or the biggest economies, like for example Germany imports 49% of the Russian gas, or the Russian natural gas, which is huge in number. Then Italy, if you talk about, again holds a very major chunk, which is 46% they are importing from the Russia. Then we have Poland 40%, France, though it is 24%, but again is a big number, right? And there are countries which are dependent completely on the Russian gas, like for example North Macedonia, like for example Moldova, Finland be 94% dependent here on the Russian gas. So you can see they are so much dependent on the Russian gas. ठीक है, अगर हम ओवरऑल यूरोप की बात करें तो यूरोप जो है इंपोर्ट करता है नेचुरल गैस को, एंड रशिया सप्लाइज 40% of this total imports to the European Union. Now, since they are importing this much amount, they must be having some gas pipelines which is interlinking Russia and Europe. So yes, they do have gas pipelines interlinking Russia and Europe. What are those pipelines? So these are some of those pipelines, like for example Yamal is one pipeline. We have Blue Stream, another pipeline which is connecting Russia to European Union, again to supply the natural gas. Then we have Turk Stream, and then we have Nord Stream. For our today's discussion, Nord Stream is really really important. Nord Stream काफी news में भी रहता है because Germany has recently imposed some sanctions, or they have suspended the certification process of Nord Stream pipeline 2. We will understand कि Nord Stream pipeline 2 है क्या और इसके certification process को Germany ने क्यों suspend किया है. So first I would want all of you to look at this map wherein you will see Nord Stream pipeline number 1. This is pipeline number 1, which is already in working and supplying gas from Russia to Germany. And today's context also this today's context also belonged to Nord Stream pipeline number 2 also. ठीक है, जो 60% रशिया ने कट डाउन करा है वो इस पाइपलाइन नंबर 1 में से ही गैस सप्लाई को कट डाउन करा है. इफ यू लुक एट दिस ब्लू लाइन पैरेलली रनिंग to Nord Stream pipeline number 1, इसका actually this is not in working. इसका अभी कंस्ट्रक्शन ही पूरा नहीं हुआ है. Around 90% construction has been done, but कंस्ट्रक्शन पूरा होता उससे पहले ही Germany has suspended its certification process. What do you mean by, what do you understand by suspension of certification process? Certification process को suspend कर देने का मतलब है कि अभी आगे कोई भी काम नहीं हो सकता. Construction work cannot take place until Germany approves it. Right? Okay. Now the question arises, why Germany has done this? Germany को ही problem होगी, ठीक है? Germany पे ही gas का supply का issue होगा. But even then Germany has done this because Germany is a NATO member. We all know this, and Germany was against Russia in Germany and Ukrainian war. That this was the precise reason why Germany stopped this certification process of this pipeline. All right. Now,
if yeah, sorry, if we look at some of the alternatives, now the question arises, okay, अगर कल को ऐसा हो गया रशिया ने पूरा बैन लगा दिया, ठीक है, so what could be the alternatives European would have? Alternatives क्या हो सकते हैं? The first alternative would be LNG और liquefied petroleum, sorry, liquefied natural gas. ये एक natural gas ही है basically, but इसको, इस gas को हम liquid form में convert कर देते हैं. If I talk about the ratio, so this is 1 to 600, which means 600 600 kg of gas can be compressed into 1 kg of liquid. ठीक है, एंड देन व्हाई डू वी डू दिस? बिकॉज अगर हमने इतना कम लिक्विड में उसको कंप्रेस कर लिया, इट विल बी इजी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में काफी इजी हो जाएगा, राइट? बट देर इज सर्टन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो विच इज रिलेटेड विद दिस, दैट इज एलएनजी को एक्सपोर्ट करना, एलएनजी को सॉरी इंपोर्ट करना अपने कंट्री में इज लिटिल एक्सपेंसिव than the gas Europeans are taking from the Russia. ठीक है, but I guess they have the desired infrastructure in their country. Europeans have the desired infrastructure, and I guess it would not be a major issue. ठीक है, इतना तो वो afford कर ही सकते हैं. The next alternative would be hydrogen energy. They can also shift towards hydrogen energy. The next could be other nations. They can start importing from other nations. Like for example, they can start importing natural gas from Norway. Norway is a Nordic country which is situated at the northern side of Europe. Then they can also start importing wood from Azerbaijan. Azerbaijan is a country which is situated at the border of, you can say at the border of Eastern Europe and Western Asia. That is where this country is situated. And the very important country which is USA, United States of America से भी ये import कर सकते हैं, because United States of America, USA is already holding a second largest LNG importer position, and they are also targeting to become the world's largest LNG exporter. So they're already exporting huge amount of LNG. ठीक है, सेकेंड नंबर पे ये फॉल करते हैं आफ्टर रशिया. सो दीज आर द थ्री कंट्रीज मैं आपको बता देती हूँ LNG एक्सपोर्टर्स. फर्स्ट कंट्री इज रशिया, सेकेंड इज US, थर्ड इज कतर. ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, आप इनकी रैंकिंग भी याद रखें और ये तीन कंट्रीज को एटलीस्ट याद रखें, LNG एक्सपोर्टर्स, राइट? यू नेवर नो, दे कैन आस्क यू इन योर एग्जामिनेशन, राइट? सी, दो the European Union has alternatives, but many reports and many analysts are of the opinion that replacing how much, 150 to 190 billion cubic metric per year, this much, ठीक है, Europe used to import from Russia. So replacing this much gas would be challenging for the European Union to achieve it in a short span, right? But हम आगे ही देखेंगे कि वो कैसे अचीव करते हैं, क्या फ्यूचर में क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं, right? And we will keep covering these topics. जो भी डेवलपमेंट्स होंगे we will keep covering. So this was about Europe gas crisis. Up next, we have OPEC countries or OPEC plus. Recently, Russian President Putin and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, they gave a positive assessment to their cooperation on the OPEC plus group to stabilize the world oil market. So OPEC, if you talk about OPEC, it stands for Organization of the Petroleum Exporting Countries, founded in Baghdad, Iraq, with the signing of agreement in 1960 by 5 countries. और उन 5 country का नाम है Islamic Republic of Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela. These 5 countries, you have to make sure that you remember them. They were to become the founding members of the organization, right? And OPEC's objective is to coordinate and unify petroleum policy among all the member countries, right? So these are those countries, as you can see here: Iraq, Kuwait, Iran, Qatar is situated here. Then you have UAE, then you have Saudi Arabia, Nigeria, Angola, Venezuela, Ecuador, and Algeria. These are the member countries you have to remember.
ऑलराइट, नेक्स्ट अप वी हैव G20. G20 के कॉन्टेक्स्ट हम देख लेते हैं. रिसेंटली यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी एंड हर काउंटरपार्ट्स फ्रॉम मोस्टली वेस्टर्न ब्लॉक ओनली, दे वॉकड आउट ऑफ G20 finance boffin session as Russians officially began to speak. So basically it was a boycott. When we talk about G20, तो ये एक G20 एक एनुअल मीटिंग होती है ऑफ द लीडर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स में. वो डिसाइड करते हैं आपस में बैठ के, राइट. Its member account for 85% of the world's GDP and two-third of its population. ठीक. G20 summit जो है उसको फॉर्मली हम कहते हैं summit on financial markets and the world economy because it deals majorly with the financial things, right? If we see here, globally it accounts for 65% of the population, 79% of the world trade, 84% of the world economy, and 79% of the world carbon emissions. And these figures you can remember to write in your mains examination, right? And these are the G20 countries as you can see here. ठीक है. अगर हम प्रेसिडेंसी की बात करें, दे हैव नो परमानेंट स्टाफ ऑफ इट्स ओन. सो एवरी ईयर दिसंबर में दे मीट. ठीक है. G20 countries from a rotating region takes on the presidency, and that country is then responsible for organizing the next summit also. ठीक है. Along with the smaller meetings of the coming year, वो सब वही जो पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी है वही ऑर्गेनाइज करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन ऑल्सो चूज टू इनवाइट नॉन मेंबर कंट्रीज ऑल्सो एज अ गेस्ट मेंबर्स. ऑलराइट, चलिए. नेक्स्ट वी हैव इंडिया आउट कैंपेन. सो मॉलडीव्स में आपने देखा होगा काफी टाइम से इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है. ठीक है. व्हाट इज दिस इंडिया आउट कैंपेन? एक्चुअली you need to listen, you need to understand this story before you understand what is India out campaign. Actually the whole story, the entire story started in 2010 and 2015 जब वहां पर इब्राहिम सोले की गवर्नमेंट थी. सॉरी, अब्दुल्ला यामीन की गवर्नमेंट थी. इब्राहिम सोली तो अभी हैं, अब्दुल्ला यामीन की गवर्नमेंट थी. अब्दुल्ला यामीन वाज अ प्रो चाइना लीडर. ठीक है. तो एक्चुअली क्या हुआ था दैट वी गेव Dhruv advanced helicopters to Maldives on humanitarian purposes. But Abdullah Yamin की गवर्नमेंट ने ये पोर्ट्रे किया अपने अपने लोगों को that it is not for humanitarian purpose, it is for it is why? Because we Indians, or we India as a country, we want to increase our military presence in Maldives, और इसलिए हम अपने ये ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भेजे हैं हमने वहां पर. बट इट वाज नॉट सो बेसिकली. ठीक है. नाउ यू मस्ट आस्क कि अब तो इनकी गवर्नमेंट भी नहीं है, फिर अब ये प्रोटेस्ट क्यों? एक्चुअली इनको हाउस अरेस्ट किया गया था. अभी 2018 में ही इनको रिलीज किया गया है. तो जैसे ही रिलीज हुआ, ठीक है, इनके जो भी माइंडसेट था या फिर इनके जो भी ग्रुप्स थे, उन्होंने फिर से ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है. राइट. So you have this was the major, this was the entire thing or the entire context. Now this mapping portion is really important. इंडिया के perspective से अगर आप देखो तो मालदीव्स यहाँ पर situated है. ठीक है. If we zoom in Maldives, तो I'm really sorry, this is a wrong map here. Andaman Nicobar का ये map है. I'm really sorry. We will some other day in my next class I will be covering with Maldives का मैप ऑल्सो. ठीक है. मालदीव्स के मैप को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे एज टू विच ऑल यू कैन से कौन से वहां पर पोर्ट सिचुएटेड है. इट इज आर्किपेलागो बेसिकली विच इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ठीक है. तो हम उन कुछ आइलैंड्स के बारे में देखेंगे. ठीक है. हम कुछ पैरेलल्स भी पढ़ेंगे, बट सो इन नेक्स्ट सेशन आई विल ब्रिंग अप विद दिस. Right. So that was about Maldives and India out campaign. Next topic belongs to science and technology, a mystery liver disease. Mystery क्यों बोला है? And it is a liver disease. Mystery इसीलिए बोला है क्योंकि इसका cause अभी नहीं मिला है हमको. We do not know what is the exact cause behind this disease. Some of the WHO scientists are of the opinion that it might be because of the adenovirus. ठीक है. SARS CoV2 वायरस जो है उसकी वजह से हो सकता है. बट ये बच्चों को काफी 1 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. उनके लिवर को काफी इम्पैक्ट कर रहा है. लिवर वी नो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट, हमारे बेली के राइट साइड में सिचुएटेड होता है और इसका काफी सारे फंक्शंस होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इट हेल्प्स इन ब्लड प्यूरिफिकेशन, इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, इट आल्सो हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. Along with that, so I'll just write down the few of the functions of liver. Very important, can be asked in your normal science wala part mein. Functions of the liver: protein synthesis, it helps in protein synthesis. Along with that, it also helps in metabolism. सबसे important function, blood purification. Blood purification में it also helps. So next could be
in filtration and storage of vitamins and minerals. You can write them down. आप ये कुछ लिवर के फंक्शंस लिख सकते हो, ठीक है? So what is this disease is all about? Cause, as I've told you, mystery है ये, अभी नहीं पता चला है क्या cause है इसका. Scientists are searching for this. What are the symptoms? Dark urine, pale feces, jaundice हो जाता है, itchy skin, nausea and vomiting, lethargy, stomach pain, feverish भी लगता है. These are some of the symptoms. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अप नेक्स्ट वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक, अरोरा. सो अरोरा, जिसको आप कॉमनली अरोरा बोरियोलिस भी कहते हैं और अरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहते हैं इन दी नॉर्दर्न एंड दी southern poles respectively. Okay, recently what has happened that aurora glow was recently observed above Iceland after a dead sunspot, ठीक है, erupted. अरोरा होते क्या है, ठीक है? First of all, I want all of you to have a look at this. So as you can see here, these beautiful lights, इनके पीछे का जो फिनोमिना होता है behind this aurora is basically they are caused by collision between fast moving electron from space with oxygen and nitrogen in Earth's upper atmosphere, right? And these electrons transfer their energy to the oxygen and nitrogen atoms and molecules, making them excited. And finally, as the gases return to their normal state, they emit photon. और वहीं से हमें जो है light, ये beautiful lights हमें देखने को मिलती हैं. Right? So this was this science behind. If we talk about the effect, so इनका communication lines पे काफी impact होता है, radio lines पे या power lines पे. Along with that, it should also be noted that here that the sun's energy in the form of solar wind is behind the whole process. So it is the solar wind or the sun's energy, as I've told you also, ठीक है? As I've told you the entire science behind it also. All right. So up next we have वर्ल्ड हीमोफीलिया डे. हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ये एक, अगर आपको इफ यू गेट अ कट तो आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी अगर आपको हीमोफीलिया है तो, ठीक है? तो क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं हीमोफीलिया में ड्यू टू सर्टेन म्यूटेशंस एंड सर्टेन चेंजेस इन द क्लोटिंग फैक्टर्स. ओके, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे को हमने सेलिब्रेट किया है ऑन 17th of April एंड वी सेलिब्रेट इट एवरी ईयर. इस साल का जो थीम था वाज एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी प्रोग्रेस, एंगेजिंग योर गवर्नमेंट, इंटीग्रेटिंग inherited bleeding disorders into national policy. Such a huge theme. But anyways, ये एक medical condition होती है जो कि inherited होती है. We inherited from our parents, in which the ability of blood to clot is severely reduced. ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया if you get a cut तो आपकी bleeding नहीं रुकेगी, right? So that even a minor injury can cause a severe bleeding, and these are some of the causes. Like for example, genetic mutation से होता है. The mutation involve change in genes that कोड फॉर प्रोटीन दैट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस. तो उस जीन में जो है म्यूटेशंस और कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से क्लोटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है. सो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स वी हैव डन. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि हीमोफीलिया एग्जैक्टली होता क्या है. यू नेवर नो, कुछ मैच द फॉलोइंग में आपको आ सकता है वेदर व्हाट इज हीमोफीलिया, राइट? अप नेक्स्ट वी हैव यूरोपा. सो ये वाला टॉपिक मैंने जानबूझ के इसलिए डाला है, देयर जस्ट वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस, ठीक है? बिकॉज सैटर्न के मून के बारे में यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन, सो यू नेवर नो, इट कैन आस्क यू अबाउट जुपिटर्स मून आल्सो. सो दिस इज जुपिटर्स मून, right? Only this one point you need to remember. Recently what has happened, researchers have said that there might be an abundance of water pockets beneath the formation called double ridges on Jupiter's moon Europa. So you have to remember this point कि कहाँ का moon है ये? Jupiter का, right? Europa is slightly smaller than Earth's moon and its diameter is about 1/4 of that of Earth and has very thin oxygen एटमॉस्फेयर, ठीक है? नासा इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इट्स यूरोपा क्लिपर इन 2024. ये भी आप याद रख सकते हो, विच इज अ मॉड्यूल विच विल बी ऑर्बिटिंग द जुपिटर एंड कंडक्ट द मल्टीपल क्रॉस फ्लाईबाइज टू यूरोपा टू गैदर द डेटा ऑन द मून्स एटमॉस्फेयर और उसके पूरे सर्फेस को ये जानने की कोशिश भी करेगा. ऑलराइट, सो इट इज अ जुपिटर्स मून. अप नेक्स्ट वी हैव अफ्रीकन स्वाइन फीवर. अफ्रीकन स्वाइन फीवर आपने देखा होगा, काफी सारे जगहों पर अभी देखने को मिला है. वी
all must have read also about it, especially नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में हमारे काफ़ी बोला गया है कि देखने को मिला है. अफ्रीकन स्वाइन फीवर है क्या? ये एक कॉन्टेजियस डिजीज है, काफ़ी फेटल हो सकती है, स्पेशली पिग्स में ये मिल रही है. इट इज़ अ फेटल डिजीज. इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि 100% आपकी डेथ होती है इसमें if pigs have this disease. But this one thing you need to remember, और यूपीएससी इस पॉइंट को टारगेट भी कर सकता है if it is animal, if it can be transmitted from animal to human. So no, animals to human ये ट्रांसमिट नहीं होता. It can only be transmitted from animals to animals. ह्यूमंस में अभी कोई भी ऐसा केस नहीं देखने को मिला है जहां पर ह्यूमन में ये ट्रांसमिट हुआ हो. फर्स्ट केस अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था 1920 की मैं बात कर रही हूँ. एंड द मोर्टेलिटी इज क्लोज टू 100%, लाइक आई हैव टोल्ड यू. और बहुत ही पेनफुल डेथ होती है. इनफैक्ट कई बारी तो इफ वी डिटेक्ट दिस डिजीज इन पर्टिकुलर एनिमल, हमें उनको जानबूझ के क्या है हमें वी हैव टू किल देम ताकि उनको बहुत पेन ना हो. पेनफुल डेथ से हम उनको बचा सकें, राइट. एंड सिंस द फीवर हैज नो क्योर, द ओनली वे टू स्टॉप इट स्प्रेडिंग बाय कलिंग द animal. ठीक है, we kill the animals to stop it, right? As of now there is no approved vaccine also. Just have a look at this. So there is no approved vaccines. Biological vectors जो है वो आपके soft ticks वगैरह हो सकते हैं, right? ह्यूमंस में ट्रांसमिशन नहीं देखने को मिला है. पिग्स टू पिग्स ट्रांसमिशन होता है, राइट. एशियन कंट्रीज में भी ये काफ़ी देखने को मिला है. आपको वियतनाम वगैरह, लाओस, कंबोडिया में भी आपको ये देखने को मिला है. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट द सिम्टम्स तो आपको रेड स्किन देखने को मिलेगा, हाई फीवर यू विल सी, डायरिया यू विल सी, वॉमिटिंग यू विल सी, राइट. एंड डेथ जनरली हैपन्स इन 6 to 13 days आफ्टर द इंसेप्शन. ऑलराइट, चलिए moving ahead with the next topic which belongs to environment. Solomon Islands, very very important island. इसकी location बहुत important है. I will take you to the mapping portion of it wherein I'll show you the map, the location of it. But recently अभी चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, और यू कैन से एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ है, which is a great cause of concern for Australia as well as for us, because we are trying to limit the might of Chinese in Indian Ocean region, but वो अपना इंक्रीज करते जा रहे हैं अपनी पावर्स को. तो दिस इज डेफिनेटली अ कॉज ऑफ अ कंसर्न फॉर ऑल द मेंबर्स. फॉर क्वाड ग्रुप इट इज अ कंसर्न, फॉर ऑकस ग्रुप इट इज अ कंसर्न. आप सबको पता है ये कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए कुछ ग्रुपिंग्स बनाए गए हैं. सो दिस इज अ ग्रेट कॉज ऑफ अ कंसर्न फॉर ऑल दोज कंट्रीज विच आर ट्राइंग टू लिमिट द पावर ऑफ चाइनीज इन द इंडियन पैसिफिक रीजन स्पेशली, राइट. नाउ लेट अस सी द मैपिंग पोर्शन. सो इफ यू सी इट इन दी ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पर आपको ये सोलोमन आइलैंड्स मिलेगा. इफ यू जूम इट इन हियर, सो दिस इज सोलोमन आइलैंड्स. इसकी कैपिटल है होनियारिया, राइट. इफ वी सी दिस इज पापुआ न्यू गिनी island, right. And again these are some of the islands, not that important, but again you what you need to remember is Australia के यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको सोलोमन आइलैंड्स देखने को मिलेंगे इन दी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पैसिफिक रीजन, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन. ऑलराइट, दिस इज सोलोमन आइलैंड्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नैटपॉल रेक्स 8. डिफेंस पे हम आ गए हैं. नैटपॉल रेक्स क्या है कि अभी रिसेंटली 8th एडिशन इसका हमने कंडक्ट करा है. नैटपॉल रेक्स इज नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज. शायद एक क्वेश्चन आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा इफ यू विल बी एबल टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ इट. इट इज नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज. आईसीजी ने ये कंडक्ट करा है, विच इज इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट. द ऑब्जेक्टिव इज टू enhance the preparedness and response capabilities of all the stakeholders in combating the marine spills. जो marine spills हो जाते हैं उनको कहीं ना कहीं combat करने के लिए, reduce करने के लिए ये एक्सरसाइज हम कंडक्ट कर रहे हैं, राइट. इट एम्स एट validating the procedure and guidelines as contained in NOSDCP, which is National Oil Spill Disaster Contingency Plan at the national and also at the regional level. Up next we have Vagsheer. ये 6th edition जो है, I mean 6th submarine जो है of P75 प्रोजेक्ट, जो हमारी इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है, उसी का एक प्रोडक्ट है, उसको हमने रिसेंटली लॉन्च किया है. इट इज द लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो P75 के अंडर बनाया गया है, अंडर P75 INS कालवरी. Then we have Kanderi, we have Karanj and we have Vela, जिनको हम ऑलरेडी बना चुके हैं, कमीशन हो चुके हैं और सी ट्रायल्स
जारी है फॉर वागीर। वागशीर की अगर हम बात करें इज नेम्ड आफ्टर द सैंड फिश, ये एक सैंड फिश है। दे कैन आस्क यू अबाउट दिस दैट व्हाट इज इट रिलेटेड टू, सो इट इज अ सैंड फिश व्हिच इज ठीक है, जस्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, एंड द फर्स्ट सबमरीन वागशीर फ्रॉम रशिया वाज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी ऑन डिसम्बर 26 1974. Okay, this also you can remember if you want to see. This is the photo of Vakshi submarine, right? Next, up next we have Sarmat Intercontinental Ballistic Missile. Intercontinental Ballistic Missile. The first question UPSC can ask you that which country it belongs to. ठीक है, ये intercontinental missile कौन सी country का है? So this belongs to Russia. Russia has recently tested this what? An intercontinental ballistic missile मतलब जो कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट टारगेट कर सकती है। जनरली इनकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है, बट इसकी बहुत ज्यादा रेंज है। इट कैन टारगेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट इज सेड कि कुछ 11000 से 18000 11,000 टू 18,000 का इसका रेंज है। सो दे कैन टारगेट एनीवेयर, द रशियंस नाउ कैन टारगेट एनीवेयर। ठीक है, ओके। सो रशियंस बेसिकली, द रशिया इज बेसिकली ट्राइंग कि जो भी उनके ओल्ड मिसाइल्स हैं उनको एडवांस मिसाइल्स में वो कन्वर्ट करें, राइट। ऑल्सो दिस इज या यूक्रेनियन वॉर के टाइम पे ये सब उन्होंने किया है, राइट। एंड इफ यू सी हियर, इसमें जो है आपके 10 वॉर हेड्स आपको देखने को मिलेंगे। इस मिसाइल में 10 वॉर हेड्स हैं। 10 वॉर हेड्स मतलब आपके पास 10 वॉर हेड्स हैं। आप 10 अलग अलग डायरेक्शंस में टारगेट कर सकते हो ताकि रडार के लिए डिफिकल्ट हो जाए टू ट्रेस यू। ठीक है, तो 10 वॉर हेड्स इसीलिए भी लगाए गए हैं। द न्यू मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैज द हाईएस्ट टेक्निकल एंड टैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज एबल टू ओवरकम ऑल द मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटी सैटेलाइट डिफेंसेस also, right? Up next we have Sir Chotu Ram, belongs to culture. So अब personalities हम कुछ देख लेते हैं। We will read about 2-3 personalities in our today's lecture. First personality is Sir Chotu Ram. काफी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली। दे डायरेक्टली आस्क यू क्वेश्चंस, द पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस समटाइम्स। ठीक है, तो 1881 में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन इन ब्रिटिश इंडिया, पंजाब प्रोविंस से ये बिलोंग करते थे। ही चैंपियन द इंटरेस्ट ऑफ ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज, सो ही फॉट फॉर ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और उनको नाइटहुड में मिला था 1937 में। नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के ये फाउंडर भी थे, को फाउंडर थे एक्चुअली। एंड द इनैक्टमेंट ऑफ 2 अग्रेरियन लॉज वाज प्राइमरली ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अग्रेरियन लॉ में भी इनका कंट्रीब्यूशन था। एंड दोस 2 अग्रेरियन लॉज वर द पंजाब रिलीफ इंडेटनेस एक्ट ऑफ 1934 और पंजाब डेटर्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1936, जो कि पीजेंट्स के लिए था, पीजेंट्स को हेल्प करने के लिए थे। ठीक है, तो ये आप कुछ पॉइंट्स इनके बारे में याद रखें। नेक्स्ट इज अलूरी सीताराम राजू लेड द रंपा रिबेलियन। इफ यू हैव सीन दैट मूवी RRR, you all must be familiar with this personality, right? So recently हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने, they have visited the birthplace of freedom fighter श्री अलूरी सीताराम राजू, राइट। तो आंध्र प्रदेश से जो बिलोंग करते हैं। 1992 में अलूरी सीताराम राजू ने, ही वाज एन रिवोल्यूशनरी एंड ही लेड दिस रंपा रिबेलियन। रंपा रिबेलियन क्या था? रंपा रिबेलियन वाज बेसिकली अगेंस्ट द ब्रिटिश राज फॉर द इम्पोजिशन ऑफ 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, जिसने सीवियरली रिस्ट्रिक्ट करा था फ्री मूवमेंट को ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज इन देयर ओन फॉरेस्ट, मतलब उनके खुद के ही फॉरेस्ट में उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। उसी के अगेंस्ट रंपा रिबेलियन वाज फॉट बाय अलूरी सीताराम राजू। 1922 की हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन ओवर दिस पर्सनालिटी। दे हैव आस्क्ड अबाउट आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ के बारे में 2-3 बार वो क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये एक बंगाली पोइट और राइटर थे। इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा है, राइट। आनंद मठ भी इन्होंने लिखा है, विच वॉज सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द सन्यासी विद्रोह। ठीक है, 18th सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, एंड हिज फर्स्ट बंगाली फिक्शन वॉज दुर्गेश नंदिनी, राइट। एंड ही ऑल्सो रोट अदर फेमस नॉवेल्स ऑल्सो, एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स, क्योंकि वो नाम बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल पूछ रहे हैं। सो द फर्स्ट वुड बी कपाल कुंडला 1866। यू हैव टू रिमेंबर द ईयर ऑल्सो। थोड़ा सा आइडिया आपको डेट के, ईयर के बारे में भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आनंद मठ का एक डेट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। देन मृणालिनी 1869
Wish Briksha 1873, Chandrasekhar 1877, Rajani 1877, राजशिमा 1888, देवी चौधरानी 1884, ये आपको सब याद रखना है, राइट। और मंथली मैगजीन भी उनकी थी बंगा दर्शन ऑफ 1872, एंड his first fiction to appear in print was the English novel Raj Mohan's Wife. So these are some of the factual points. इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, just few of the factual points you need to remember regarding this पर्सनालिटी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है. So that was all about our today's lecture. I hope it was helpful to you. We'll keep coming up with weekly current affairs. Till then, stay tuned. Thank you so much.